So good afternoon to all. So today we'll start the analytical method. The analytical method of the parallelogram law of vector addition. So at this analytical method of parallelogram law of vector addition, at तुमको कौन कहूँ? So this law, suppose the two vectors A and B vector, okay, let A vector and B vector. Statement first लिखी लो, A vector and B vector, okay. So they are inclined to each other at an angle theta. Are inclined to each other at an angle theta. Okay, then okay, be represented both in magnitude and direction. Be represented both in magnitude and direction. Be represented both in magnitude and direction by the adjacent sides. Okay. Two adjacent sides of the parallelogram. Suppose you take two adjacent sides of the parallelogram as OP and OQ. By the two adjacent sides of the parallelogram, then okay, so say adjacent side of the parallelogram कौन है? OP and OQ. Okay, OP vector and OQ vector. Then according to parallelogram law of vector addition, then according to parallelogram law of vector addition, then according to parallelogram law of vector addition, I will get, okay, the resultant of A vector and B vector, they will be represented, the resultant of A vector and B vector will be represented both in magnitude and direction, both in magnitude and direction okay. कहा द्वारा रिप्रेजेंट है? हम पढ़ी थे parallelogram law of vector addition. This will be represented by the resultant, the diagonal of the parallelogram. So direction of the resultant of the resultant side of the parallelogram. Okay, so direction of the diagonal of parallelogram. Resultant side टा मोर का द्वारा रिप्रेजेंट करिवे? Diagonal of the parallelogram. Okay, so then if I will represent this my OP and this as my OQ, OP vector and OQ vector. Suppose this is my A vector and this is my B vector, and then extend my this side, extend कला परे यार resultant केते आसला? This is OP
this I will take S, and this is my angle theta. Okay, so first I will construct कर दिए तो S रू गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ करियो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करबा, दैट परपेंडिकुलर शुड बी N एंड दिस इज माय एंगल 90 डिग्री हो, ये एंगल एटा 90 डिग्री हुए एंड एटा को जति थीटा नुए एटा को ने बीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज माय बीटा एंगल. ओके, तो ये कौन जानली ना OP वेक्टर है मोर A वेक्टर एंड OQ वेक्टर है B वेक्टर. They are two adjacent sides of the parallelogram. Then the two adjacent side of the parallelogram, if they are represented by A vector and B vector, then तांकर जो resultant side टा आसिला, that is the diagonal of the parallelogram, that is OS vector. This will be कौन हो? This will be the sum of A vector and B vector. This will then what will be the magnitude of the resultant of R vector? What will be the magnitude of resultant of R vector? सेटा हम बाहर करिया. So what will be the resultant of magnitude of केते हबो कोडा resultant magnitude of resultant R vector. This is resultant. रिजल्टेंट मु केमती बाहर करी ना. फास्ट लेगा ड्रॉ SN परपेंडिकुलर टू का को OP. ओके, OP प्रोड्यूस्ड परपेंडिकुलर टू OP प्रोड्यूस्ड. ड्रॉ SN परपेंडिकुलर टू OP प्रोड्यूस्ड. देन जो एंगल वैल्यूटा से लिख दब केते केते एंगल हो तुम एंगल SPN is your theta. This is equal to angle QOP is equal to theta and angle SON is equal to beta. So I am paile. Then we will use from the right angle triangle SNP first from the right angle triangle SNP. So from right angle triangle SNP using trigonometric identities I will get, okay, SN divided by SP, SN divided by SP. This I will get as sin theta. So therefore SN will be SP sin theta. So SP is B vector, so this is B sin theta. So SN mu kete paili B sin theta. Again in this triangle the cos theta value will be, so एठो देखि cos theta मोर कते हो PN by SP. PN by SP equal to cos theta. PN by SP यदि cos theta हुए, PN कते हो SP cos theta, SP cos theta. So SP में जानी चाहिए कते B, so this is B cos theta. So PN will be B cos theta. Now we will use the Pythagoras theorem. Okay, using this Pythagoras theorem. Now using Pythagoras theorem. Now using Pythagoras theorem, because this is a right angle triangle, so I can use Pythagoras theorem. Yes, Pythagoras theorem use कर दे पारी. So using Pythagoras theorem, I will get OS square is equal to
ओ एन रो स्क्वायर प्लस एस एन रो स्क्वायर। सो ओ एन को मुझे लिखिपारि ओ पी प्लस पी एन। ओ एन देख ये ओ एन टा केते हो ओ पी प्लस पी एन। सो ये मुझे लिखिपारि ओ पी प्लस पी एन रो स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एस एन रो स्क्वायर। ना एस एन देख ये बाहर कर पी एन भी बाहर कर सब्स्टिट्यूट करी एस एन टा केते बाहर कर कह बी साइन थीटा। सो ओ पी केते ओ पी ए सो ए प्लस बी साइन थीटा रो होल स्क्वायर प्लस एस एन केते बाहर कले एस एन देख बी साइन थीटा पी एन बाहर कले ना। सो दिस इज बी cos थीटा पी एन इज बी cos थीटा प्लस एस एन है केते बी साइन थीटा रो होल स्क्वायर। दिस यू विल यूज ओके। सो एटा को आम एक्सपांड करिया तो फास्ट टर्म केते हो ए प्लस बी रो होल स्क्वायर। सो एटा केते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो एठू मुझे नहीं पारि कॉमन किसी नहीं पारि बी स्क्वायर को कॉमन नहीं जी तो कौन आसो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा plus 2ab cos theta. So this I can write a square plus b square plus 2ab cos theta. Then I will find the direction. Okay, जति r square एटा हमर r square जति एति को है r केता हो r will be a square plus b square plus 2ab cos theta root over whole root over this will be my r square. Now ये फिगर तुम देख तो tan जति मु करी बीटा डायरेक्शन ऑफ बाहर मु करियो चाहूँ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके तो कौन हम ना tan बीटा ये ट्रायंगल ले केते हम tan बीटा will be sn by on sn by on तो दिस इज इक्वल टू sn by on केते op plus pn op plus pn तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय sn केते sn बाहर करथिले sn वी हैव कैलकुलेटेड ना sn as b sin theta this we have calculated and op is a pn is b cos theta. So this is my resultant. Tan beta is b sin theta divided by a plus b cos theta. So beta the resultant you can resultant angle. So we can find out tan inverse b sin theta divided by a plus b cos theta. Okay. Now we will use some special cases to this. Okay. The magnitude हम बाहर कले resultant vector तार किसी special case use करिया. First special case is if the two vectors a vector and b vector are acting along the same direction. Case 1, if the two vectors a vector and b vector are acting in the same direction. So यदि दीटा वेक्टर सेम डायरेक्शन ले एक्ट करंदी ताने हम जानि छु एंगल 0 हो जो तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. सो थीटा यदि 0 डिग्री होला r स्क्वायर केते हो ना r हे जिवो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. सो 2ab cos थीटा.
सो ये cos थीटा जगह मैं 0 वैल्यू पुट करी. सो cos 0 डिग्री. सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री. So cos 0 degree is always 1. Okay. So you can mention cos 0 degree. This is equal to 1. So cos 0 degree यदि 1 हुए, so this value कितने हो? This will be a square plus b square plus this will be 2ab. So यार हम रूट ओवर बाहर करेंगे. Okay. So this will be a plus b whole square root over. Okay. So here I will root over बाहर करेंगे कितने ऐसे हो? a plus b. So I will observe if the two vectors a vector and b vector they are acting in the same direction. यदि same direction ले यदि a vector और b vector direction similar ही है. b vector में एपटे नोट ना किंतु b vector यदि एपटे act करे लगे then I will observe the resultant will be a plus b. Next case, if a vector and b vector they are acting in the opposite direction. Case 2. If a vector and a b vector are acting in the opposite direction. So a vector यदि a direction ले act कला, b vector तारा opposite direction ले act करियो. So this is the meaning. So this means angle कितने होगा? 180 degree. So here you can mention theta equal to 180 degree. Cos theta is equal to cos 180 degree. So this is equal to minus 1. Okay. Now we will substitute this value in my equation. Okay. So resultant will be r equal to a square plus b square plus 2ab cos theta root over. So it I mention कर पे a square plus b square plus 2ab cos 180 degree root over. So this is a square plus b square minus 2ab cos theta minus 2ab cos theta root over. Okay, then here value कितना हो? This will be a minus b whole square root over. So this will be generally a minus b. So this is the case if a vector and b vector they are acting in the opposite direction. यदि a vector और b vector इटा opposite direction ले act करियो ताले मो resultant vector कितने पाइबी? R resultant will be a minus b. Okay. Next case हम study करें if a vector and b vector are making an angle 90 degree with each other. If a vector and b vector are making an angle 90 degree with each other. Third case, if a vector and b vector they are making an angle 90 degree with each other. A vector and b vector are acting by making an angle 90 degree with each other. So here theta will be 90 degree. So theta 90 degree and cos 90 degree is 0. So this you should mention. Next resultant कितना होगा? R resultant vector. So this is a square plus b square
प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा रूट ओवर तो ये आम cos 90 डिग्री हम देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री नाउ cos 90 डिग्री फास्ट मुझे मेंशन कर सारी 0 सो दिस वैल्यू विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर ओके सो रिजल्टेंट वेक्टर मोर केते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर okay I will get this value then what will be tan beta in this case tan beta हम पढ़ी जमी बाहर करते रिजल्टेंट दिस इज b sin 90 डिग्री प्लस b sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाय a प्लस b cos 90 डिग्री okay so this will be b by a because cos 90 degree is 0 so I will get this as b by a so beta value केते हो beta will be tan inverse b by a so the angle will be tan inverse the ratio of two sides of the vector suppose b vector गोटे साइड होता है यदि a vector होता है then b vector ताको 90 डिग्री रिएक्ट करे तांको भीतर एंगल जदि 90 डिग्री होता है ताले तार एंगल जो a एंगल टा तुमे बाहर करिवा ओके बीटा so this will be tan inverse this side and this side a so this side है b and this is a तार magnitude b vector magnitude b a vector magnitude केते a so I will get beta as tan inverse b by a so basing on this यहाँ पर बेस करिके हमें किसी प्रॉब्लम सॉल्व करिया okay this is the extension okay I'm basing on this first question two vectors both equal in magnitude two vectors both equal in magnitude both equal in magnitude okay equal in magnitude have their resultant equal in magnitude of the either have their resultant equal in magnitude of the either equal in magnitude of the either then पचारि छी तुम कौन find the angle between the two vectors find the angle between the two vectors find the angle between the two vectors तो एटी मते कुआ कौन कौन गिवन देछि two vectors देछि which are both equal in magnitude and कोठी equal in magnitude with their resultant which is equal in magnitude of the either what is this meaning so एटी मते देछि suppose I have given two vector p and q p then p रो magnitude q रो magnitude सहित सेम तार रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड सहित भी सेम हम p रो वैल्यू जहाँ हम q रो वैल्यू से हम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड रो भी वैल्यू सेतिकी आसीबो तेणु मु लिख परिबी p स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट केते हो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq the suppose angle between them is p and q is theta so pq 2pq cos theta so here I can write p q जगह p लिख दे परिबी so or p जगह q लिख दे परिबी suppose I am writing in the place of q p so this p square plus 2p square cos theta so this is 2p square plus 2p square cos theta okay here you can take 2p square common so 2p square common ले केते आसो 1 plus cos theta root of so this will be 2p square 1 plus cos theta जगह तुम लिख परियो केते
ओके ओके रिजल्टेंट रो मैग्नीट्यूड बा देछि p और q रो मैग्नीट्यूड सहित ओके समान तो एटा को लिख परियो कोन दिस एज p स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ रिजल्टेंट को लिख परि p इज इक्वल टू 2p स्क्वायर 1 प्लस cos theta root over. So this I can write p square squaring both side. I will get 2p square 1 plus cos theta squaring both side. So therefore p square this I will get 1 plus cos theta is equal to p square by 2p square half. So therefore that implies cos theta will be minus half minus 1 कितना हो minus half minus 1 this half minus 1 this will be minus half. So theta will be cos inverse minus half. So cos theta value केतला minus half हुए cos theta is minus half when cos 120 degree 120 degree रे cos केते हो minus half. So this will be theta equal to 120 degree. So your answer will be theta equal to 120 degree. Okay बुझे गला ना ये कौन नेले तीटा वेक्टर नेले p और q. तो p और q वेक्टर रो जो मैग्नीट्यूड आसिला सेटा रिजल्टेंट वेक्टर रो मैग्नीट्यूड से तो समान आसिला तेणु रिजल्टेंट जो r जगह रे मो p भी नहीं परिबी कारण p मैग्नीट्यूड से तो रिजल्टेंट वेक्टर रो मैग्नीट्यूड समान. सो तापर एनालाइज मु कली जेतले मो स्क्वायरिंग कली बिकॉज़ इट स्क्वायर रूट ओवर थिला. सो टू एलिमिनेट द रूट ओवर मु कोन कली स्क्वायर कर देली. सो आई विल गेट p स्क्वायर इक्वल टू यार स्क्वायरिंग कले में पाइले केते 2p स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा. So I will get theta equal to here 120 degree. Okay. So basing on this, I will do another problem. So two forces whose magnitudes are. Question is example 2. Two forces whose magnitude are whose magnitudes तुमको देछि in the ratio of 3:5 in the ratio 3:5. Okay, then give a resultant of 35 Newton. Give a resultant of 35 Newton. Of 35 Newton ये तुम देले रिजल्टेंट से पचारछि if the angle of inclination be 60 degree, if the angle of inclination is 60 degree, okay पचारछि कोन find calculate the magnitude of each force. Calculate the magnitude of each force. एटा हम पचारि तो ये हम कौन कौन देछि सेटा लिख दो. तो आमको p और q सपोज मु गोटे वेक्टर नेली p तो हम तक नहीं पारि 3 टाइम्स x सपोज ताको भी रेशियो 3:5 पर पाए अछि दुटा वेक्टर भीतर एंड q धरी अनदर वेक्टर नेली ता भीतर सपोज दिस इज 5x तो इनका भीतर रेशियो हो गला 3:5 चार कंडीशन इज सैटिस्फाइड. सो ताको भीतर रिजल्टेंट हो गला 35 न्यूटन. दैट मींस r इक्वल टू 35 न्यूटन एंड थीटा मते देला केते 60 डिग्री. एबे बाहर कर दे परियो निजे. So it is very easy to solve this equation. So कौन करियो ना मुझे जानी चाहिए r स्क्वायर ना r इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा रूट ओवर. सो दिस विल बी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर केते जो p स्क्वायर है जो 3x रो स्क्वायर प्लस 5x रो स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3x
इंटू 5x इंटू cos 60 डिग्री रूट ओवर सो ये मुझे भी एटार स्क्वायरिंग कले के 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 30x cos 60 degree is 1/2. So I will replace this. So x square, here x square. So this is 25x square plus 9x square, 34x square plus 15x square. So this is 49x square. So तारा रूट ओवर बाहर कले केते पाइबो 7x. तुम रिजल्टेंट पाई गला 7x. रिजल्टेंट जति तुम 7x पाई गला तुम पछारे जे कोन मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स केते हो 7x जति तुमरा हे गला केते 35 न्यूटन. तो ये तुम रिजल्टेंट दी तुम 35 न्यूटन ना. सो 35 न्यूटन है 7x. x केते जो 35/7. सो दिस इज 5 न्यूटन. तो तार जो रेशियो मु बाहर करथली 3x एंड 5x. 1 will be 3x. 3x will be 3 into 5 Newton. This will be 15 Newton. And another is 5x. So 5x will be 5 into 5 Newton. So this will be 25 Newton. Okay. So this will be 25 Newton. So one will be 15 and another will be 25. So तांके भीतर ratio देखो 3:5 आछे. You will get. So find the ratio 15/25. 5 रे काटी दियो केते आछो 3/5. So ratio is. So I will get the answer as 15 Newton and 25 Newton. Next with this question I will end the lectures. So the next question. The next question is the sum of the magnitude of two forces. Example 3. The sum of magnitude of two forces acting at a point is 18 Newton. Acting at a point is 18 Newton. It am given this. Okay, next. And the magnitude of the resultant is 12 Newton. And the magnitude of the resultant is 12 Newton. Next, if the resultant makes an angle of 90 degree, if the resultant makes an angle of 90 degree, कहाँ से तक 90 degree resultant देखिया. If the resultant makes an angle of 90 degree with the force of smaller magnitude, with the force of smaller magnitude, then ମୁଁ ପଚାରିଛି find the magnitude of two forces. Find the magnitude of two forces. ଏତିକି ମୁଁ ପଚାରିଛି. ସो ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ସେଭଳିଆ ପି ଭେକ୍ଟର କ୍ୟୁ ଭେକ୍ଟର ସପୋଜ ନେବା. ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ଦୁଇଟା ଫୋର୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି एंड तांका रिजल्टेंट होची 12 न्यूटन. सपोज मु नेली लेट ओके लेट द टू इंडिविजुअल फोर्सेस बी P and Q and theta be the angle between them. Theta is angle between P and Q vector. P vector and Q vector. So the angle हुए let P be less than Q.
पी क्यू टू कम हो देन मु कहबी द रिजल्टेंट आर वेक्टर मेक्स एन एंगल बीटा जोड़ा में पैरेललोग्राम केस रे करथुले द रिजल्टेंट आर वेक्टर मेक्स एन एंगल बीटा केते करछि एंगल बीटा करछि का सहित करूछि द फोर्स ओके p वेक्टर with the force p vector so it am use kriya this concept we will use and solve our problem then I can write tan beta is kete what is tan beta हम formula रे बाहर करथिले केते बाहर करथिले q sin theta divided by p plus q cos theta p plus q cos theta तो हमको क्वेश्चन अकॉर्डिंग हम कौन दीची बीटा है दीची ओके कॉस बीटा वैल्यू हमको दे दीची के 90 डिग्री एटा हमको क्वेश्चन ला गिवन दे दीची रिजल्टेंट दिस आर मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विथ ईच अदर सो वी कैन सॉल्व दिस सो tan बीटा 90 डिग्री दिस मींस q sin थीटा डिवाइडेड बाय p plus q cos theta so this is equal to tan 90 degree means this is infinity so ये जो वैल्यूटा मोर रहिला ये वैल्यूटा केतळे इन्फिनिटी हबो केतळे हो जेतळे p plus q cos theta 0 हबो सिंपल when p plus q cos theta is 0 so p plus q cos theta जति 0 हबो त तमे थीटा वैल्यू बाहर कर दे पारिबो कि यदि p plus q cos theta 0 हुए तो थीटा वैल्यू बाहर कर दे पारिबो p plus q भी तुमको दे दीजिए 18 न्यूटन सो हाउ कैन यू फाइंड द थीटा वैल्यू तो एठी हम गोटे यूज करबे रिजल्टेंट वेक्टर रो कांसेप्ट रिजल्टेंट केते p स्क्वायर plus q स्क्वायर plus 2pq cos theta ये कांसेप्ट हम लगे दे पारिया 2pq cos theta तो ये हमको दे दीजिए गोटे जिनस कौन देछि p plus q रो होल स्क्वायर सो रिजल्टेंट दे दीजिए हमको 12 एटा हमको दे दीजिए रिजल्टेंट वेक्टर इज 12 देन एटा हम यूज कर दे परिया p स्क्वायर plus q स्क्वायर plus q स्क्वायर plus 2pq cos theta is equal to 12 रो स्क्वायर 144 p square plus q square plus 2pq cos theta this will be 144 12 रो square then p square p plus q मिसी के 18 q केते हो 18 minus p रो square whole square plus 2 p q जगह रे पुन लिखिबा 18 minus p ओके q जगह रे केते लिखिया 18 minus p and okay 2p q cos theta okay this is q cos theta ये जगह रो केते हो this will be from this I can write p plus q cos theta यदि 0 हुए q cos theta केते ही जो minus p so this you can mention there q cos theta ही जो minus p so this is my 144 okay so this I can solve p square plus 18 रो square 324 plus p रो square minus 2 into 18p 36p plus एटा जो के minus 2p रो square is equal to 144 so this is p square plus p square 2p square minus 2p square केते ही गला 0 then 324 minus 36p is equal to 144 so 36p केते ही जो 36p this will be 180 minus कर दियो to 324 minus this will be 324 minus 144 एटा माइनस करो केते हो 180
सो 36 पी मोर होगा 180 पी के 5 सो आई विल गेट पी एज 5 जदि मु पी 5 पाई गले क्यू भी पाई मुझे यदि पी 5 होगा क्यू के 18 माइनस 5 सो दिस विल बी 13 न्यूटन सो गोटे फोर्स अब 5 न्यूटन एंड अनदर फोर्स विल बी 13 न्यूटन सो तुम्हें कंडीशन सैटिस्फाई हो 1 is 5 q is 13 so at 5 newton plus 13 newton you will get 18 newton so your answer will be p equal to 5 newton and q equal to 18 newton okay so thank you everyone so for joining this class okay thank you